इसके दिल में पड़ ठीक. Okay. So now we shall discuss about gates. Logic gates. What do you mean by this logic gates? See, logic gates, name itself says that it works on certain logic. That logic may be mathematical or some other logic. For example, what is the meaning of logic here means, let us take one example here. I am discussing about a NOT gate. What I am discussing here? I am discussing about a NOT gate. You can just see here. What is this NOT gate explaining? NOT gates, NOT name itself says that. तो नाम में ज़्यादा समझ में आया था सर. 50% सब्जेक्ट नाम में था. Output is not of input. That means if you give input as 0, output is 1, and input is 1, output is going to be 0. That means output is complement of input. Complement of input. Okay, and this NOT gate is a symbol. And the circuit behind that is going to be a transistor. इसके वास्ते तो ट्रांजिस्टर समझ आना था. एक कॉन्सेप्ट के वास्ते ट्रांजिस्टर जरूरी था. ये मानी करता हूँ ना. पार्टिसिपेट लेने में बहुत अटेम्प्ट ले दो. गॉड लिपिल पापम टेंशन लौट रहा है. नारायण का. So that's why కొంచెం टेंशन दूर नहीं आ सकती. निकाले तो टेंशन ले लेगा. Okay. So अब देखो what is this functioning of a transistor? See transistor किस तरह काम करता? If you take input as 1. And what is output? This resistance is going to be the output here. Okay. So this resistor is going to be the. This resistance is going to be the output. Here output is collected, isn't it? So if input is 1, that means the resistor starts working. Input is 1 means this emitter, base emitter junction is forward bias. This is emitter, this is base, and this is collector. Whenever base emitter junction is forward bias, 1 here 1 you are giving means you are supplying 5 volts. That is the meaning of 1. See, logically 1 and 0. 0 means you are supplying 0 volts. 1 means you are supplying 5 volts. That is the meaning of 1. Because in digital electronics, the system will understand only 2 numbers, 1 or 0. Whenever LED is off, it is 0. Whenever it is on, it is going to be 1. Output is 5 means is 1. If you do 5 volts, then only LED will glow. Glowing means 1. So to glow an LED to show 1, it should be glow. It has to glow, and to glow we have to supply 5 volts. So whenever you supply 1 volt to the transistor, transistor is emitter base junction forward bias, transistor starts working. So whatever the power supply is there, it goes to the ground. Nothing will be there in the output. Whenever you give 1 to the transistor, nothing is there at the output because transistor will be in on condition. It starts working, it absorbs the voltage which is supplied in the input, and here it is going to the ground. Ground is a good source of positive and negative charges, an abundant source of positive and negative charges. Whatever you give, it will take. So whenever you supply 1, output is 0. Whenever you supply 0 volts means you doesn't conduct anything. You doesn't conduct anything here. You doesn't supply any power source. This transistor is in the reverse bias condition. Okay, this is in the reverse bias, or you can also call this is 0 volts, this is 0 volts, because ground is a good source of both positive and negative. जितना positive है उतना negative है, इसलिए इसे neutral बोलते हैं, 0 बोलते हैं. Ground is said to be 0. Understand? And whatever the VCC you are supplying as 5 volts, as this is unbiased condition, transistor doesn't work. When you supply 0 volts, output will be at the output only. It doesn't come to the ground. So when you give 0 at the input, output is 1. Output much hai. When you supply 5 volts at the input, transistor functions. Whatever the voltage you supply at VCC, that is going to the ground. Nothing is there at the output. So that is the functioning of a NOT gate. NOT means input is complement of output. That is nothing but if this is A, this is going to be A bar. 0 bar is 1, 1 bar is 0. That is called as logic gate, which is called as NOT gate. The name itself says that output is not of input. जो भी input दो उसका output रहता नहीं, उसका opposite रहता. Means input is 0, output is 5 volts, input is 5 volts, output is 0. That's a simple logic. इतना आसान टॉपिक है ये तो बच्चों को समझ में आता है आराम से.
8th 9th के बच्चों को भी समझ में आया, इतना आसान टॉपिक है. Now let us go ahead with another gate. Let us go ahead with another gate here. So how many forms we are going to explain this gate? Let us see here. You just see here. I'm going to discuss about the next gate, which is called as OR gate. Okay, which is called as addition. It shows an addition operation, which is a logical operation, which is addition operation. See, gates are constructed to do addition, subtraction, multiplication, higher and lower, which is higher and which is lower, arranging the names in the order of their alphabets, arranging the marks with the decreasing order of their values. So all these operations who is going to do, computer is going to do, and what is present in that? Gates are present in that. That is said to be mathematical as well as logical operations. So previous the case was logical operation where you input as 0, it works on the logic of not input. Understood? So this is doing an addition operation. So what is this addition operation? How this gate is constructed? What is the symbol of this gate? You can just see it is like this. Understood? Like this. Okay. This is a symbol. And what is the circuit in the gate? This is the circuit. What is present in the gate? It is having two diodes. Okay, two diodes. Output resistance, which is said to be a load resistance RL, and this is going to be the ground. Load resistance RL, and you are going to see two diodes. Now, what is the logical operation? Addition operation. See here, why the name is given as AND here? ये AND बोल के नाम क्यों आया इसको? We shall discuss here. That's a very good logic here. नाम समझने की कोशिश करें ना, फिजिक्स में बहुत मजा आता है. If you know your naming, meaning of your name, then it's very easy to understand the name, remember the name for a longer time. So here, if A and B is high, if A and B, what is this now? This is R, no? ये तो R operation है ना? If A or B is high, output is high. That is the meaning of OR gate. R, here I am writing R. Why I am writing R? A or B is high, output is high. That's why its name given as R gate. ये में ये तो भी हाई रहना, B तो भी हाई रहना, तो आउटपुट हाई रहता. दोनों भी हाई रहता और हाई. So 1 and 1 is going to be, and you will be telling that sir this is addition operation बोले ना. So A plus B, Y is going to be A plus B you said. Okay. So A is input 0 0. 0 plus 0 is 0, 0 plus 1 is 1, 1 plus 0 is 1. Sir, 1 plus 1 is, how can it be 1? It is 2 actually, you are telling. Actually 1 means high. High and high, output is high only. 1 represents high here. इसके ऐसे सर्वो से उड़ रहा था मैं आपको. 1 plus 1, 1 टाइप को सही समझ में आता, लॉजिक क्या है इसके अंदर. 1 means here high. High plus high. See, LED is glowing. Glowing plus glowing is much glowing, not glowing. Right or not? So glowing and glowing, when inputs are high, output definitely will go with more brightness. It doesn't mean it is taken as 2 here. Understood? So यहाँ पर इतना समझने आता, अगर ग्लो हुआ तो 1, अगर नहीं ग्लो हुआ तो 0, ज़्यादा ग्लो हुआ तो 10 लेते क्या? 1 इच लेते. मेरे को ग्लो होना बस. समझ में आ गया? बस ग्लो होना जरूरी. So here addition operation. Understood? 1 plus 1 is 1 here. So 1 plus 1 is 1 means high plus high is high here. That's it. That is the meaning of high. 1 बोले तो high. 5 volts बोल के. Yes. समझ में आ गया? तो 5 volts input में यहाँ पर देखो. What is the logic behind this? Let me discuss about that now. Yeah. So just here, you are supplying 5 volts. Or first of all, what shall we do now? अब देखो ये diodes कैसा काम करते हैं. I am giving 0 and 0. And it is connected to the output ground, it is always 0. When input is also 0, output is also 0, diode doesn't function. Understood? Input अगर 0 दे दिया, output भी 0 है, and input should be high, output should be low, then only it is said to be forward biased. When input is low, output is high, it is said to be reverse biased. When input and outputs are same, that is said to be unbiased. No biasing is there, unbiased. Forward bias हुआ तो output बताता. रिवर्स बायस हुआ तो आउटपुट 0. अनबायस कुछ भी नहीं है, इनपुट जितना है आउटपुट उतना ही सकता है. डायोड विल नॉट फंक्शन. समझ में आएगा? सो इन अनबायस कंडीशन आल्सो डायोड विल नॉट वर्क. Input is 0 and 0, you get output as 0 only. Now next thing is input is 0 and 1. This is unbiased condition.
this is forward bias, this is 1 and that is 0. That means the diode will function, it gives output as 1. तो आउटपुट कहाँ है? लोड रेजिस्टेंस के पास है आउटपुट। सर वो भी ज्यादा अंदर बोल के सोचे होंगे आप लोग, नहीं, उधर अंदर जाने से पहले इधर से गुजरना ना उसको, रेजिस्टर के पास आके अटक जाता हो, यहाँ पे कलेक्ट होता। जो भी इनपुट 5 वोल्ट्स और सप्लाई, you know it is going to be 5 volts, output is 0 volts. That means the diode B will conduct, A will not conduct. It is unbiased condition and output is going to be 5 volts आगे रेजिस्टेंस के पास जमा हो जाता। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? It is a source like one tank which collects the potential, which collect the charges. What is the difference between potential and current? Potential means stable charges. Charges at rest is said to be potential. Charges in motion is said to be current. So whatever the power supply you are doing here, supplying here, this diode will conduct. It will show 1. 5 volts will be outside. 1 bata. Now, when we consider this as 5 volts and this as 0 volts, means this is 1 and this is 0. 1 and 0. This is said to be forward biased. This is said to be unbiased. It doesn't conduct. That will conduct. कौन सा भी एक conduct करे तो मैं output 1. Because whatever the input you are supplying, there you are getting the output as 1. रेजिस्टर के पास कुछ माल है तो 1, कुछ भी माल नहीं है तो 0. So it's going to be 1 here. So what I am going to do now? I am supplying 5 volts. This 1 and 1 both are forward bias. इसको भी 5 volts सप्लाई कर रहा है, इसको भी 5 volts सप्लाई कर रहा है, यहाँ पर 10 volts आ गए। Means देखो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सिर्फ 2 ही कंडीशन समझ में आते हैं सर्किट्स को 2, 3, 4, 5 नहीं समझ में आता, डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं समझ में आता, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, नो। Digital electronics, whatever the devices you are using, it will understand off condition or on condition. 2 ही समझ में आता, या तो off या तो on. समझ में आ रही बात? That's the meaning of digital electronics. So here, यहाँ पर 10 volts दिया तो on condition, it's not going to be 2 here, it's on. On means 1. Understood? So it's going to be 1. So this is the logic behind the OR gate. This is the circuit diagram, and this is going to be the symbol of an OR gate. And this is said to be truth table. Truth table actually. Okay. So truth table having A, B, and output A, which is said to be A plus B. Okay. अब यहाँ पर देखो, कभी कभार instead of taking diodes, we can construct OR gate by using switches also. Okay. We can construct OR gate by using switches also. How? Okay. So how? Let us see it now. So you are going to supply the 5 volts here, isn't it? And that is positive and negative. Battery actually इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, बैटरी भी डाल सकते हैं यहाँ पर, पॉजिटिव सिंबल नेगेटिव सिंबल. नाउ यू जस्ट सी, तो यहाँ पर 5 वोल्ट्स यू आर सप्लाइंग, अगर दोनों अगर ओपन है तो बल्ब ग्लो होता क्या? When both A and B are open, does the bulb glow? No, because whatever the power supply you are supplying, these 2 switches are open. Then how does the input will go to the output? Doesn't go. It is said to be open circuit. Open circuit current does not flow. So when open means this is 0 and this is 0. That's why bulb will not glow. It is going to be 0. Now what I am going to do here, I will close this one. That means this is 1. Understood? This is 0. This is 1. 1 is closed means there is a path for current. Current बहुत उष्टा है. उधर पे जाके मरता, रास्ता ही नहीं होता. जहाँ पे कनेक्शन है वहाँ से गुजर जाता. करंट भी बहुत हुशार है. It passes to this and the bulb will start glowing. So glowing means 1. I told you. Glowing means 1. Now you just see here. I am taking. अभी तो मालूम है ना, ये 1 ये 0. Same condition. Both I am closing. Both I am closing means 1 and 1. So whatever the power you supply, दोनों रास्तों से गुजरता बाहर आया. Going to be 1. In previous year questions, he is using this type of circuits also. Instead of taking diodes, he is using switches also. So we can construct diodes by using switches also. I think the total logic of this OR gate is understood. Yes, sir. बोलो. 5 plus 5 मतलब आप बोले ना सर कौन सा है वहाँ पे रेजिस्टेंस के पास वो आता है. तो 10 कैसा आया सर? 5 plus 5 ऐड हुआ तो नहीं आता, दोनों मिलके. 1 plus 1 ऐड करे तो वही चीज़. मैं वही बोल रहा हूँ. यहाँ पर 5 1 बोले तो क्या मतलब? 1 बोले तो 1 बोल के नहीं रहे, ऑन कंडीशन ऑफ कंडीशन बोल के. समझ में आ रही बात? तुम्हें मैं पूछा तुम्हारा मूड कैसा है, बोल तो सर मेरा मूड थोड़ा ऑन में है सर. आज
कितना आन में है बोले तो बोल सकते हैं सर 10 वोल्ट्स है सर आज मेरे को, कल 5 वोल्ट्स थे, कल भी आनिश थी, मैं आज भी आनिश हूँ, आज 15 वोल्ट्स है मेरे पास, आज 100 वोल्ट है, आन है नहीं है सर, आज मैं थोड़ा मूड ऑफ है सर, जल्दी खत्म कर दो क्लास चले जाता हूँ, मूड ऑफ है, कितना मूड ऑफ है, -20 है, -30 बोल सकते हैं, ऑन है ऑफ है इतना ही बोल सकते हैं ना, उसको भी मेजरमेंट रहता है, ऑफ है मूड बोले तो कितना ऑफ है, उसे खा रहे बुढ़ा होकर को समझते हैं, अरे भाई ऑफ है ऑन है बोले तो समझ में नहीं आ रहा, अभी उसको कितना ऑफ है कितना ऑन है उसको भी मेजरमेंट रहता है, थर्मामीटर रहता है, किचन में रखो, समझ में आ रही बात, तो मैं थोड़ा मजाक की तरह से समझा रहा हूँ, तो मतलब तो ये क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन को ये करने का रास्ता नहीं, जरा मजाक के अंदाज में समझा रहा, समझ में आने का, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, इज इट ओके? So let us go for the next gate, and this is going to be AND gate. What is this? AND gate. Okay, AND gate is nothing but it does multiplication operation. Multiplication operation. What is the meaning of multiplication operation? A, B, Y is going to be A into B or A dot B. Multiplication operation. What is the meaning of multiplication? Just multiply करना. अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं आता तुम्हारा. So 0 into 0 is 0, 0 into 1 is 1, 1 into 0 is 0, 1 into 0 is 0, 0 into 1 is 0, 1 into 1 is 1. 1 into 1 is not 2, isn't it? यहाँ पे समझाने की जरूरत नहीं. एडिशन के पास डाउट आता बस उतना ही. उसको समझाना बहुत मुश्किल बच्चों को उधर, वो लेक्चरर के ऊपर रहता हो टैलेंट है, उसको कैसा भी करके समझ. So this is going to be AND gate, and so here what is the meaning of AND gate? Name itself says that if A and B is high, then only output is high. Okay. So A and B is high, then only output is high. And दो भी, A तो A भी B भी दो भी high है तो output है. So this is said to be a symbol of an AND gate. In that what are present? There are two diodes. उसको ऐसा भी डाल सकते हैं, ऐसा भी डाल सकते हैं. Two diodes which are in the reverse direction. Okay. No. ये resistor नीचे भी आ सकता है. कैसे भी डालो doesn't matter now. Is it? No. No, just here. So this is having certain circuit also like this. Okay. So now let us see what is going to happen now. So output you are supplying VCC which is 5 volts. Now just see here. Now what I am going to do is A is 0, B is 0. Means what? The diodes are connected in reverse order. Input is high, output is low. Both the diodes are forward bias. Whatever the 5 volts is there, वो इधर आ जाता. इधर क्या रहता? कुछ भी नहीं. 0. Nothing is there. 0 is there. So that's why output is 0. Now this is 0 and this is 5 volts. 5 volts means 1. So this is 0, this is 5. Already input is 5. Input is 5, output is 5. One is unbiased. One is forward biased. The unbiased diode will not show any action. Neither forward nor reverse. So input is, दोनों में से एक forward bias में तो भी काफी है. Whatever the output is there, वो पूरा अंदर आ जाता. यहाँ पर resistance के पास कुछ भी नहीं रहता. 0. समझ में आ रही बात? Now, इसका ये दो same. Almost. Now. Let us see what is going to happen. So this is 5 volts and this is 5 volts. Let us supply. That means 1 means 1 and 1 means input you are supplying 5 and 5. Already this is 5. ठीक है? तो इसको अलग से सर यहाँ पर 10 तो सर नहीं अलग अलग डायोड. इसको भी 5 दे रहे हैं, इसको भी 5 दे रहे हैं. एक को 10 नहीं दे रहे हैं. एक को 10 दिए तो फिर रिवर्स होता. दोनों को 5 अलग दे रहे. इनपुट भी 5 है. तो both are in the unbiased condition. That means output whatever you are supplying it is not coming to the input. Diodes are not functioning. Output will be the output only. So 5 volts will be at the output. That means now output is 1, isn't it? What is output? Output is 1. Why? Because 5 volts है ना, दोनों diodes कोई भी 5 volts लेने के लिए तैयार नहीं है. भर के है दोनों को. कैलकुलेटर पेड़ भर के है. इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट से नहीं लेते. तो आउटपुट ही रहता. So whatever the supply are there, that is output. So 1 means 5 which is 1 and 1, and this is going to be 1. That's why output is 1 only. That's it. Clear? So that is called as a logical, mathematical operation. It is doing a multiplication operation which is done by AND gate. See, AND and OR में थोड़ा सा difference है. What is the difference in AND and OR? OR का circuit ऐसा रहता.
आर एंड भी ऐसी रहता मगर ये लाइन सीधा रहता बस, दैट्स इट, दैट इज द डिफरेंस, जस्ट रिमेंबर दैट मच. सो इनपुट के पास कर्व आया तो आर, सीधा आया तो एंड में डी है और एंड गेट भी डी के जैसा रहता, ठीक है. आर में वैसा नहीं है, आर में थोड़ा कर्वेचर आता, दैट इज द डिफरेंस. इज इट ओके? नाउ सी द नेक्स्ट गेट which is called as a NOR gate. NOR means combination of R plus NOT. What is that? Combination of R plus NOT gives you NOR. NOR. What is NOR actually? See here, I'll tell you. See, input is A, B, output is Y, and this is Y dash. ये हो गया. This is going to give you R, this is going to give you NAR. जो भी R में आता उसका कॉम्प्लीमेंट को NAR बोलते हैं, because whatever input is there, NOT क्या करता, जो भी आता उसका उल्टा करके देता. Understood? So if I take 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 and NAR means इसका आउटपुट जो भी आता उसको बिगाड़ के उसका उल्टा देता हूँ. So it is going to be 1 0 0 0. That is called as a NOR gate. Okay, and it is NOR gates. R plus NOT is called as a NOR gate. It is also having another name that is also called as bubbled OR gate. Bubbled OR gate. Instead of drawing one NOT gate, NOT के आगे का जो bubble है ना यहाँ डाल दिए तो बस है. समझ में आएगा? Yes sir. You just draw one OR gate and keep one bubble. Bubble represents NOT. फिर NOT डालने की जरूरत नहीं. Shortcut to represent. And if it is a OR gate, there won't be any bubble. If it is a NOR, it is having a bubble. That's it. A simple logic. क्या है मुश्किल है? इससे आसान टॉपिक तो इंटरमीडिएट में है ही नहीं. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आसान टॉपिक इंटरमीडिएट में है ही नहीं. So that is called as bubbled OR gate. And NOR gate हो गया. Let us go for NAND gate. What is the meaning of NAND? AND plus R is called as NAND. Okay, sorry. It's a NOR. Not. AND plus NOT gives you NAND. Understood? And the other name is bubbled. Bubbled AND gate. Okay. Instead of drawing this, you can just keep on bubble. Bubble represents a NOT gate here. A simple logic here is if it is A, if it is B, if it is Y, Y is said to be AND, and Y bar is complement, which is said to be NAND. Is it clear? Yes sir. So 0 0 0 1 1 0 1 1, isn't it? Yes, inputs. So here, and what is the gate of here? That is said to be multiplication operation. And क्या काम करता multiplication. So 0 into 0 0 0 into 1 0 0 1 into 0 0 1 into 1 is 1 and not इधर not आ गया यहाँ सामने. not का क्या है? काम क्या है? जो भी बोलो उसका उल्टा. छोटे बच्चे वही काम करते. मेरा बच्चा था छोटा, अभी मंझला जो है ना कितना था ना 3 साल का था. इसकी माँ बोली रे देख इस्त्री पेटी रखी हमारी आयरन करने का आयरन बॉक्स बहुत गर्म था. छीना ने उसको बोल के गए चूल्हे के पास. गर्म था कभी देखने एक बार जलाने के घूमना शुरू कर दिया. ऐसा पूरा जल गया, उसको छल्ले चले आ गए. अब मैं फिजिक्स का हूँ, मालूम मैं क्या करा है, ऐसा नहीं होता. अब इसको क्या करना, जलन को एनेस्थीसिया दे दें. पूरे आइस पीसेस निकाल दो. काला था आस पड़ोस के पूरे आइस पीसेस ला कर डाल दिया पूरे बर्तन में, डाल के थोड़ा पानी डाल दिया, हाथ रख एक 5 मिनट उछला है. पूरा क्या होता उधर एनेस्थीसिया हो जाता आइस पीसेस से. ठंडा पानी में डाला था उसका सेंसेशन चले जाता, वरना 1 घंटा उछलता बच्चा. इसकी जलन कम होने के लिए सबसे गलीज चीज़ क्या बोले तो जलना. कटा तो थोड़ी देर जलता, जलन ऐसी जलन रहती हो बहुत बुरी जलन. अल्लाह किसी को जल को मारने के नहीं देना. बच्चा आंख पे डाल लिया या तो कुछ तो भी डाल लिया, जल गया, वो तो बहुत बुरा. जलन ऐसी चीज़ है, जलना इतना भी जल गया ना बहुत तकलीफ होती. इतना कट गया तो तकलीफ नहीं होती तुम्हारी. समझ मेरी बात. कट गया तो तकलीफ, जल गया तो बहुत खतरनाक रहता हूँ. क्या नहीं 5 मिनट उस टाइम पे मैं इमोशनल नहीं होना. सोचा मैं क्या करना है, इसको फिजिक्स का लॉजिक काम आता मेरी पढ़ाई का काम आती है. यस फ़ौरन आइस पीसेस ला कर डाल दिया. बहुत सारे लोग क्या होता है आइस नहीं डालना, घी लगाना,
तो कोलगेट पेस्ट लगाते थे, पागल है, और ज़्यादा जलन होता उससे। हाँ, तो ये हो गया इसका NAND गेट। तो उसका काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ ए नॉट गेट? जो भी दो उसका उल्टा करके देता हूँ, या अब डायरेक्ट दे दिया जाए, अंडरस्टूड? डायरेक्ट तो सोल्यूशन दे दिया, आउटपुट ही दे दिया जाए, अंडरस्टूड? यार समझ में आ गई बात? सो हियर इट इज y मीन्स, हियर इट इज y, हियर इफ इट इज y मीन्स हियर इज गोइंग टू बी y बार, ठीक है? नॉट के बाहर गया तो y बार हो जाता है। Hope you are understanding now. See, NAND gate and NOR gate, NAND and NOR are called as universal building blocks. NAND and NOR are called as universal building blocks. Why they are universal building blocks? Because by using NAND and NOR we can construct other gates. कोई सा भी गेट बना सकते हो, कौन सा लेके? NAND और NOR. We can take these two gates and construct other gates. अब देखो, ओके, सो उसके पहले थोड़ा और एक गेट है विच इज कॉल्ड एज XR गेट। XR गेट, इट इज हैविंग वन नेम, द नेम ऑफ दैट इज सेड टू बी XR गेट, XR गेट बोल सकते हो इसको, एंड इट इज हैविंग अनदर नेम विच इज कॉल्ड एज exclusive OR gate. It is also called as exclusive OR gate. ये काम करता, क्या काम करता मालूम? It doesn't do any mathematical operations. It doesn't do any addition, subtraction, or multiplication. It does logical operation. What is a logical operation? By seeing these inputs, you can understand. When both the inputs are same, output is 0. When both the inputs are different, output is 1. ठीक है? मैं एक बार जोक सुनाया तुम्हारे, आज कल फिर वही जोक सुनाया, हंसी आती 0। मैं एक बार एक इमोशन बोल के रुलाया, फिर वही इमोशन से रुला रहा, रोना आता। सर मसले भाई किताब खुला दी, एक जोक बोल दिया फिर मारा क्या बेइज्जती, वही जोक डाला, बदल भाई थोड़ा इंप्रूव कर ले जोक्स को थोड़ा, है ना? सो अभी और एक एग्जांपल आई गिव यू। फॉर एग्जांपल, इन ए सेल वन नेम इज ऑलरेडी स्टोर्ड, your friend's name is already stored, and you met your 10th class friend again after 10 months. अरे भाई तुम्हारा नंबर दो जी, बहुत दिन आगे बाद दिखे तो मेरे को, अरे दो नंबर, अरे है कि तुम्हारे पास नंबर? अरे है कि नहीं कि तुम दो जी, पहले दो नंबर ले लिए, सेव करे, सेव करने की कोशिश करे तो ऑलरेडी एग्जिस्ट, डू वांट टू रिप्लेस हो जाता, मतलब एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। ऑलरेडी एक चीज़ है तो फिर दोबारा उसको ऐड करने का तो एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। हाँ, ऑलरेडी है तो कहीं को दीवाना हो गया, कितने बार स्टोर करता, तेरा भेजे में दिमाग मेमोरी नहीं, मेरे पास है बोल रहा हूँ, सेल तेरे भेजे में नहीं तू ऐड करा, सो मेरे भेजे में है बोल रहा हूँ। अब तेरी मर्जी फिर ऐड करता तो कर ले, दूसरा नाम रखना पड़ता। हाँ, या तो समीना 1 बोल के रख, या तो समीना 1/4 बोल के रख, कुछ तो भी रख, बहुत सही थी, सही है 1/4 रख, समझ मेरी बात? यू हैव टू रिप्लेस एंड कीप सम अदर नेम, आर अरे ऑलरेडी है जी, सॉरी है तुम्हारा नाम नंबर है, नहीं स्टोर करते उसको, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल ऑपरेशन। वो NOR गेट काम कर रहा तुम्हारे सेल में, हो कौन सा गेट? XR गेट, सॉरी एक्सक्लूसिव OR गेट बोलते हैं। इसका काम क्या है? अगर डिफरेंस है तो ले लो, सेम है तो छोड़ दो, अंडरस्टैंड? सेम है तो छोड़ दो, ठीक है? सो दैट इज अ लॉजिकल ऑपरेशन हियर, ओके? सो अब सर्क्यूट डायग्राम्स बहुत सारे हैं इसके, दिस इज आल्सो वन सर्क्यूट डायग्राम, दिस इज आल्सो वन सर्क्यूट डायग्राम, आई कैन कंस्ट्रक्ट एनी सर्क्यूट डायग्राम्स। हम तुम्हारे को आसान सर्क्यूट डायग्राम बता सकते हो, बुक्स में ये है ना, है तो मैं तुम्हारे को एक आसान सर्क्यूट डायग्राम बना के दे सकता हूँ। लेट अस फर्स्ट एक्सप्लेन दिस डायग्राम, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, लेट अस सी। अब ये है, इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, थोड़ा तो ठीक है। अभी देखो, दिस इज ए इज 0, बी इज 0, सर्क्यूट डायग्राम ऐसा है। व्हाट इज देयर इनपुट? नॉट इज देयर, either one not. Here A is connected directly, that means it is A, and B is passing through the NOT gate, means B bar. Bar means ulta, bar means complement. समझ में आई बात? See, A is not connected directly to the AND gate, it is connected through NOT gate, means B after NOT becomes B bar. B bar means complement. Here A is not directly connected to NOT gate, it is connected through NOT gate. So A will become A bar at the input, isn't it? So here A is connected directly, here B is connected directly, but A is through NOT, here B is through NOT, and this is said to be multiplication operation,
means a bar into b, this is a into b bar, समझ में आ रही बात? And this is said to be output. Output क्या है? Let us see. So what is the output here? ये कौन सा गेट है? एडिशन ऑपरेशन. ये क्या काम करता है? This is एडिशन जी. R है वो कर्व है, ये कर्व, ये D है, ये कर्व है, इसलिए बोला ना भाई. थोड़ा चौड़ा कर दिया तो शेप ही चेंज होगा. D के करीब दिख रहा है, but I am saying this is a addition and this is multiplication. ये पूरे D है. मैं क्या बोला तुम्हारे को? ऐसा अगर है तो नॉट R, थोड़ा D स्ट्रेट है तो एंड. तो ये स्ट्रेट है क्या? थोड़ा कर्व है ना, तो एंड है वो. And this was said to be R. उल्टा बोल रहा है. This is R and this is and. Multiplication, this is addition. Understood? So अभी क्या हो रहा है? आउटपुट देखो एक मरतबा. देखो कितना आसान है ये जो सर्किट डायग्राम है ना. अब मैं तुम्हारे को अपने ओन से ड्रॉ करके बताता हूँ कितना आसान है सर्किट डायग्राम. तो व्हाट इज द आउटपुट हियर नाउ? देखो फर्स्ट दिस इज एंड नो, मल्टीप्लाई करना. दिस इज a bar डॉट b एंड दिस इज a डॉट b bar. ये दोनों को ऐड कर रहा है. इसका मतलब व्हाट इज द आउटपुट हियर? आउटपुट इज गोइंग टू बी a bar डॉट b प्लस a डॉट b bar. समझ में आई बात? दैट इज गोइंग टू बी द आउटपुट. अब देखो यहाँ पर खेल क्या है बोले तो, इफ a एंड b आर बोथ जीरोस, अब देखो 0 bar 0 प्लस और क्या है 0 dot 0 bar. When you are considering 0 bar, it is 1. 1 into 0 is 0. And 0 into 1 is 0. It's going to be 0. Output is 0. Understood? When both are zeros, output is 0. Okay? अभी देखो. I am taking this is 1. Now both inputs, if I take 1, I am taking 1 here. I am taking this is 1, this is 1. Understood? Understood what is going to happen? अभी मैं ये भी 1 ले रहा हूँ. 1 bar डॉट 1 प्लस 1 डॉट 1 bar. लॉजिक समझो इधर. इफ 1 bar means it is going to be 0 into 1 plus 1 into 0. 1 के बाद जो मैं 0 मल्टीप्लाई कर देता तो 0 आता है कैसा. इसलिए क्या कर रहा हूँ ना, एक के बाद एक बार कर दिया. ऑटोमेटिक से एक 0 आता है, 1 होना ही. दैट्स द रीजन व्हाई आउटपुट इज गोइंग टू बी 0. सो नाउ let us take कौन सा भी एक 0 ले लो, कौन सा भी एक 1 ले लो. एंड दिस इज गोइंग टू बी 0 bar into 1 plus 0 dot 1 bar. इसका खेल क्या है बोले तो, दोनों अलग ले लेना तो कहीं तो भी एक दोनों मिलते सेम होते. बिकॉज 1 is going to be 1 bar, 0 bar is 1 into 1 plus 0 into 0. 0 plus 1 is 1. Output 1 आ. उसका उल्टा भी 1 ही छोड़ा. Understood the logic here? This is said to be the exclusive OR gates. Understand? Output is high when inputs are different. That is the logic behind this. Understood? Output is high when inputs are different. Output is low when inputs are same. A simple logic. It's said to be logical operation. It's not a mathematical operation. It's said to be a logical operation. So I think you understood what is an exclusive OR gate. Yes. Exclusive OR gate का symbol क्या है मालूम? XR गेट कुछ भी नहीं है, बस एक R गेट यू हैव टू ड्रॉ. डाल के ऐसा थोड़ा एक्स्ट्रा लाइन डाल दिया ना, इट्स गोइंग टू बी एक्सक्लूसिव R गेट और XR गेट भी बोल सकते हैं. एक्सक्लूसिव बोले तो एक R गेट का कुछ एक्सक्लूसिवली काम कर रहा है, कुछ अलग ढंग से काम कर रहा है. ठीक है? अलग ढंग क्या है उसका? इसको R बोल के नाम क्यों दिए? बिकॉज एनी वन इज हाई आउटपुट इज हाई. दिस आर दैट इज हाई आउटपुट इज हाई. करेक्ट है? आर का काम कर रहा है. इफ एनी वन इज दिस आर दैट इज हाई आउटपुट इज हाई. इधर दो भी हाई है तो आर क्या कर रहा है? हाई देता, मगर इन्हें नहीं दे रहा. सही ढंग से इन्हें काम कर रहा है एक्चुअली आर बोले तो. दिस आर दैट इज हाई आउटपुट इज हाई. व्हेन बोथ आर हाई इट्स हाई इन आर गेट. बट हियर व्हेन बोथ आर हाई आउटपुट इज नॉट हाई. थोड़ा अलग. आर का काम कर रहा, आखिरी जगह पे नहीं कर रहा. बस ओनली वन कंडीशन इज डिफरेंट फ्रॉम आर. आर है तो यहाँ पर 1 आता था, इधर 0 आ रहा. इट्स गोइंग टू बी 0. इज इट? Yes. दैट्स एक्सक्लूसिव OR गेट. सिंपल लॉजिक. नाउ अभी देखो, आई एम टेकिंग NAND गेट्स, आई एम टेकिंग NOR गेट्स. सो दीज आर NOR गेट्स एंड दीज आर NAND गेट्स. NAND है जी, यहाँ बबल डाल दिया, छोटा डाल दिया. मैं थोड़ा बड़ा करके बता दूँ. दिस इज अ बबल. बबल दिख रहा वहाँ पे, बहुत छोटा डाल दिया है ना? बबल दिख रहा ना थोड़ा है, बबल तो है. डायग्राम सुराइसा है, उधर से जल्दी काम आसान होने के वास्ते थोड़ा कलरफुल रहा तो अच्छा दिखता. लड़कियों को तो और अच्छा दिखता. सो नाउ दीज टू डायग्राम्स. अब हम क्या बनाए इसको लेके? आई हैव टेकन 2 NAND गेट्स
and I have constructed AND gate. So implementation of AND gate using NAND gates. NAND gate लेके AND gate बनाए, NOR gate लेके AND gate बनाए. तो स्ट्रक्चर इस तरह रहना चाहिए इसको. So one more thing is here, if you want to take NAND and construct NOT, if you want to take NOR and construct NOT, you can construct. It's a very simple logic. What is that? I am taking one NAND. दोनों इनपुट्स को ज्वाइन कर दिया, and this is the output input and this is the output. I am constructing NOR gate. By using NOR gate, I am constructing NOT gate. Understood? So दोनों इनपुट्स को ज्वाइन करके दीजिए. So this is NOR as NOT, and this is NAND as NOT. Not. NAND जी AND नहीं करते. यूनिवर्सल बिल्डिंग ब्लॉक्स NAND है, NOR है, दूसरे नहीं आते. NAND NOR यूज करके दूसरे गेट्स बना सकते हैं. I told you already, not OR gates. I told you that the gates which is used to construct other gates is either NAND, NOR or NOR. And नहीं है इसमें. I have taken NAND gates. I have taken NOR gates. Only inputs have joined. Now let us see whether it is going to function like a NOT gate or not. NOT gate कैसा काम करता नहीं करता एक बार देखेंगे. So I have taken 0. Input is 0. That means this is 0, this is 0. 0 into 0 na, and means 0 into 0 is 0. After crossing bubble it is 1. Bubble is not, no. Bubble will give you complement. Bubble से पहले complement नहीं. Bubble से पहले 0, bubble के बाद 1. That's why it is giving 1. समझ में आया? So one take it as a 1. So this is 1 and 1. So 1 into 1 is 1. Bubble cross हो गया तो 0. Structures are same for both. So let us take this gate is acting like a NOT gate or not. 0. To take 0 means both are zeros. एक इनपुट से दो इनपुट बन रहे. And this is 0 plus 0 is 0. After crossing bubble it is 1. Understood? Is it clear? Now I am taking 1 as the input. 1 means both are 1s. So 1 plus 1 is 1 in OR gates. 1 plus 1 is 1 in OR gates. High is high only. High नहीं होता. So high bubble cross हुआ तो 0. So 1 you take it becomes 0. So I am taking NOR as not, NAND as not. Understood? Now you just see. And here NAND as AND. Truth table correct है नहीं है देखो. ठीक है. Truth table correct है नहीं है देखो. थोड़ा सा इसको. Now just see here. This should be proved to be a AND gate. Am I right or not? So what is the logic behind the AND gate? A, B and Y. And what is AND? It does multiplication operation. Am I right or not? It does multiplication operation 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1 and 1. So I am taking here, first thing is I will take it as 0 and so this is 0 and this is 0. Okay. 0 into 0 is 0. Bubble cross हो गया तो 1. और ये तो NOT gate है. अभी बोला ना? अभी बोला ना? When both the inputs are joined and bubble is acting like a NOT gate. ठीक है? समझ में आ रही बात? So output is Y, which is nothing but A dot B whole bar. So 0, 0 is 0 before the bubble. After crossing the bubble is 1, and this is NOT gate. 1 means 0. समझ में आ रही बात लॉजिक? Yes sir. So this is 0 and 1. So 0 into 1 is 0. Bubble cross हो तो 1. 1 का हो गया 0. वो भी सेम. उधर भी बबल नहीं क्रॉस करते सर, दूसरे सेकंड में. अरे वो तो NOT गेट बोल के प्रूव कर दिया ना ऑलरेडी. बबल क्रॉस हो ना हो, NOT गेट इज ना हो.
अच्छा ठीक है, अब ये 1 हुआ ना, ये दोनों 1 1 हुए, अंदर क्या हुआ 1 into 1 हुआ, 1 into 1 1 होता ना, बबल क्रॉस हो 0 हुआ, वही तो अपन प्रूव करे। सो कहाँ पे प्रूव करे वो, यहाँ पर प्रूव करे ना, यहाँ वही तो करे सो काम। तो ये नॉट गेट्स, ये नैंड गेट डायरेक्ट वहाँ पे आ गया, अंडरस्टूड, दैट इज ओनली नॉट गेट। Is it clear? Yes, sir. So now just take this as 1. See, 1 into 1 is 1 before bubble. After crossing bubble, it is 0. This is 0. This is 0. 0 into 0 0. After crossing bubble 1. क्या हो रहा है? कौन सा लॉजिक है ये? AND gate का लॉजिक ही है ना? It's a logic of AND gate multiplication operation. 1 into 1 only will give you 1. समझ में आ रही बात? So it is acting like a bar नहीं है इधर. Just A to B ना, because we are constructing AND gate here. We are constructing AND gates. ठीक है? Is it clear? Now we have to show that NOR gates are acting like AND gates. ठीक है? Okay. So what are these two gates? These are NOT gates, no? Input join कर दिए, bubble भी है. Are they NOT gates? Yes, sir. NOR gate now, NOR gate. ये तो NOR gate है. NOR as not. Yes. वही तो है इधर. Okay. So here x y a b output is y. It should be a dot b, no? Yes, sir. That is what we have to prove now. 0 0 0 1 1 0 1 1. ठीक. So first thing is 0 0 ये तो 1 1 हुआ. Yes. Not gets ना ये. Just complement. So 0 0 means 1 1. 1 into 1 is 1 before NOR, and NOT gate is there. This is NOT gate. Bubble cross हुआ तो 0. Is it? ठीक. Now. So 0 and 1. This is 0 and this is 1. These are both NOT gates. 1 0. 1 in 1 plus 0. So plus है ये, not है not. Sorry. R है R. This is R gate. Inside bubble हटा दिए तो R है. Understood? So 1 plus 1. Sorry, 1 plus 0 is 1. Bubble cross हुआ तो 0. Is it? ठीक है. अब let us take 1 and 1. 0 0 0 plus 0 0 है ना. Bubble cross हो गया तो 1. ये दोनों सेम ना. Yes, sir. ये 1. Is it not AND gate? So I have taken 2 NAND gates and constructed AND gate. I have taken 3 NOR gates and I have constructed 1 AND gate. Understood the logic? तो ये symbols याद रखना पड़ता. You should remember the symbols. ठीक है? Now we are constructing OR gates by using NAND. We are constructing OR gates by taking NOR. These two are NOR, isn't it? क्या है ये? NOR gates. Bubbles थोड़ा छोटे डाल दिया. बड़े bubbles. Okay. अभी देखो, let us prove that A, B, Y, and our work is to show it is an OR gate. OR means addition. OR means addition. ठीक है? थोड़ा टाइम है. 9 तक रह सकते हैं. नहीं तो ग्रुप में मैसेज करा देखेगी नहीं देखा. तुम्हारी मर्जी. जाते हो तो कल बोल दूँ. कल बोले तो मैं आज गेट्स खत्म करके सोचूँ. बहुत ला लिया सामान. बहुत है इम्प्लीमेंटेशन के हाथ से तकरीबन 50, अभी 35 में 53,000. ये समझ में आया तो बारिश में उड़ जाते हो. दन उड़ जाते. समझ में आ रही बात तुम्हारी? ठीक है. बहुत ला लिया. प्रॉब्लम्स हो. गेट्स आज हो गए तो फिर कल AC नहीं वो तो AC पेंडिंग में आ रहा. मुश्किल होगा मार्क्स में. बोल के मैं सोचूँ तुम्हारी सोच क्या है. तो रकिंग को रिलेट होता हो. तुम्हारी मजबूरी है. क्या नहीं कर सकता मैं. ठीक है. लेट अस सी. So what I have to prove? So these 3 gates should act like a OR gate, isn't it? So what I am doing now, 0 0 ले रहा हूँ. 0 1 ले रहा हूँ. 1 1 I'll take and 1 1. Sorry. 1 0 and 1 1. So I'll take 0 0 first. 0 0 means 1 1. 1 into 1 is 1. After crossing bubble 0. 0 1. 0 1 means 1 0 because these two are not gates. These two are not, no?
not gates, complement gates. So 0 1 means 1 0. Here 1 into 0 inside is 0 only. After crossing bubble 1 आ गया. इसका मतलब ये भी 1 ही होता. So this is 1. 0 and 0 inside 0 into 0 0 bubble cross हुआ तो 1. Is it not addition operation? Proved. So next thing is the same thing you have to prove here also. Okay, देखिए क्या होगा. So 0 0. So 0 0. These are OR gates. Just remember. क्या कौन से gates है? These are called as NOR gates. तो यहाँ पर जो लिए हम NAND gates लिए. NAND gates we have to construct OR gate. Same NOR gates you are taking to construct the same OR gate here. See the output. Output is 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1. That's it. So here 0 and 0 if you take 0 plus 0 is 0. Here 1 and this is not. 1 हो गया तो 0 होता बाहर 0 correct. So now this is 1. So 1 plus 0 is 0 plus 1 is 1. Bubble cross हुआ तो 0. यहाँ पे bubble है. Cross हुआ तो 0. 0 हो गया 1. यहाँ पे bubble है ना. ये तो not gate है ना. This is not gate. So it's going to be 1. आ गया 1. ये भी same रहता ना. 0 okay. So now finally. So this is 1 and 1. So not gate na. 1 plus 1 1 0 1 because this is a not gate. Okay. Prove कर दिए.